इसे काम पटवा लेने का। देखो ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग 6000 वर्कर काम कर रहे हैं इनके अंदर। गुप्ता जी सही है ना? जी 100%। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर हो तो उसको भी यहाँ पे मिल जाएगा काम। हाँ मगर 2,500-3,000 आदमी को उनको लाना पड़ेगा। हाँ, वर्कर की जिम्मेदारी उनकी रहेगी। हाँ, सामने से कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा यहाँ पे। आपको मैं जो बता रहा था ना 180 फुट वाला रोड, उसके ऊपर से जो गाड़ियाँ चल के आ रही है देखो। हाँ, उस तरफ है राइट साइड में। हाँ गटर वाला काम कर देंगे तो रोड वाला काम करेंगे। हाँ, पहले गटर का ही काम हो रहा है, उसके बाद रोड का जाएगा। देखो इस तरफ ले लो सर, ये पूरा ले लो। अरे अंदर पूरा काम चालू, अंदर गाड़ी ही नहीं जा रहा है। 20 किलोमीटर तक काम चालू है। 20 किलोमीटर? हाँ, पूरा सब टीपी के अंदर काम चालू है। क्योंकि पहले बाहर जो काम करेंगे ना ये लोग, तो यहाँ की जमीन का भाव बढ़ जाएगा, तुरंत रातों रात बढ़ जाएगा। ट्रेन की पटरी भी बिछाए हैं उसको लेने को उठाने के लिए लड़ाते हैं। हाँ ये मान बहुत पैसा रोला। अरे मैं फर्स्ट में आया था तो इधर पूरा पानी था, इतना पानी में हम गए थे गाड़ी। ये तो आज आपको सूखा भी दिख रहा है, शायद आपको आगे भी लेके जावे। To make, it does not mean that the provider of those services has to be the public. Kant is aware of the situation, and perhaps that is why the DMIC has sought around 18,500 crore rupees to build the trunk infrastructure, like drainage, water supply and public transport. One must realize that there is a very important component of the trunk infrastructure. If you don't have good drainage, if you don't have good sewage, if you don't crack the trunk infrastructure, which is commercially not viable, the other component of the private-public partnership will not happen. So the trunk infrastructure, to our mind, is the key, and that is where the government needs to step in. New cities, over a 30-year period, are very commercially viable. They take a longer period. They take 13 years, 14 years to break even. But once they break even, then they generate a lot of resources. And from that 13th year to the 30th year, they in fact generate so much of resources that you can make many more cities. But the key challenge here is that you should be able to monetize land value. That is the key challenge. Monetizing land value is not the only challenge. In fact, the list of challenges is a rather long one. From land acquisition to financing to governance. When we come back, we'll see at what the road ahead for DMIC looks like. Braj Binani Group and Bloomberg UTV present Building India. Braj Binani Group and Bloomberg UTV present Building India. That is how the future cities of a country would look like. If the projections by the DMIC project are anything to go by. It is perhaps the most ambitious project since independence. From building mega industrial zones to building mega cities. The DMIC wants to give the country a complete facelift. But planning is one thing, and translating plans into reality is another. As Pradeep Singh, the Vice Chairman and Managing Director of IDFC project says, master plans are often more violated than being followed. In the history of our country and its cities, the master plans have been less